Yes, friends. Very good morning, everyone. चलिए, कैन वी स्टार्ट? कोई होमवर्क था? वेरी गुड. चलो, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जाम क्वेश्चंस. सो टुडे वी हैव टू प्रैक्टिस एग्जाम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है ना? सेकंड, आई डोंट थिंक सेकंड हमने कंप्लीट करा है. मार्क सेकंड क्वेश्चन एज होमवर्क. इफ यू हैव गॉट नोट्स, वेल एंड गुड. अदरवाइज मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करा हुआ है. ओके, सो आई होप यू विल कंप्लीट विद द होमवर्क. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हाँ, क्लास नोट्स क्वेश्चन में से इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो रेगुलर हमें यहां पे कंप्लीट करना है, उसका सेकेंड एग्जाम्पल आपको होमवर्क करना है, एंड थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो होमवर्क करना है. ओनली 2 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू एज होमवर्क, जो चेक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सिर्फ लेवरेज कैलकुलेट करना है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है. ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन रीड करो. विल सॉल्व इट ओवर हियर. कमेंट नहीं करेंगे इस एग्जांपल में. बहुत सारे एग्जांपल में हमने कमेंट किया है, सेम कमेंट होगा. सिग्निफिकेंस क्या है एवरेज का? सो विल जस्ट कैलकुलेट दिस इन दिस एग्जांपल. Just let me know once you have completed this much reading so that I can scroll it down. Can I scroll down? Financial plan A and B. Read? चलिए, तो here there are 2 situations, situation 1, situation 2. situation 1 में हमें दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट 4000 है, राइट, एंड situation 2 में फिक्स्ड कॉस्ट 5000 है. Now in this situation there are 2 financial plan, plan A, plan B. plan A में आपको डेट दिया हुआ है 15,000 एंड प्लान बी में डेट है 5,000. सेम अप्लाइज ओवर हियर, 15,000 एंड 5,000. बाकी सब कुछ दिया हुआ है, या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. सो वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. फिक्स्ड कॉस्ट माइट बी गिवन टू यू. फिक्स्ड कॉस्ट तो यहां पे दिया हुआ है बेस्ड ऑन द सिचुएशन. तो you'll be getting EBIT minus interest depends upon the debt content. इसका rate of interest भी दिया हुआ है. So we can calculate EBT and operating and financial leverage हमें calculate करना है, right? But then based on your concept बताइए, in this 4 scenarios, four scenario ना, situation 1 plan A, situation 1 plan B, situation 2 plan A, situation 2 plan B. Operating and financial leverage highest कहाँ पे होगा और कंबाइंड लेवरेज हाईएस्ट कहां पे होगा? सिचुएशन 2 प्लान ए बराबर, या ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी हाईएस्ट वेयर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी हायर. तो सिचुएशन 2 में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज वहां पे हायर होगा. फाइनेंशियल लेवरेज विल बी हायर वेयर डेट कंटेंट इज हायर, क्योंकि इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट हायर है. तो प्लान ए, राइट. तो सिचुएशन 2 प्लान ए में
आपका टोटल लेवरेज हाईएस्ट होगा, बिकॉज बोथ ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर, राइट. बट देन हमें कमेंट करना नहीं, जस्ट कैलकुलेट करना है इन द 4 कॉलम्स, राइट. So can we solve this example? चलिए write down example number 4. हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल and combine the leverage. This is situation 1 2. So we'll draw situation 1 2, and in that plan A, plan B. Situation 2 may be plan A, plan B. So we have to draw 4 columns. फॉर्मेट अपना सेम रहेगा, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. What we'll do, first we'll write sales in units, क्योंकि sales in units आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है डायरेक्टली. Can you tell me how much will be the number of units sold in units? 1000 टोटल कैपेसिटी दिया है 2000, एंड 50% हम एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल कर रहे, तो 2000 का 50%. So number of units sold will be 1000 in all columns. Now we can write sales in rupees at the rate 20 per unit. So less variable cost at the rate 10 per unit. So in all columns 10,000. So we'll be getting contribution. Less fixed cost. अब सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट 4000 है, तो फर्स्ट 2 कॉलम्स 4000 4000, एंड सिचुएशन 2 के कॉलम में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन टू यू इज 5000. So we'll be getting EBIT 6000 6000 5000 5000. And from this we are supposed to deduct interest. अब प्लान ए के कॉलम में डेट कंटेंट कितना है 15000, एंड इस पे इंटरेस्ट है 10%. हाउ मच अमाउंट विल बी राइटिंग इन प्लान ए? 1500. तो प्लान ए के कॉलम में 1500 1500, यू कैन शो वर्किंग 15000 इंटू 10%. एंड प्लान बी के कॉलम में डेट कंटेंट इज 5000,
तो इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 500. तो प्लान बी के कॉलम में इंटरेस्ट अमाउंट 500 500. So write down EBT. $4,500, $5,500, $3,500 and $4,500. Now this much information is sufficient to calculate the leverages. Operating leverage वहीं पे फॉर्मूला लिखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. पूरा लिखना है आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. EBIT you can use short form. Okay, don't write C upon EBIT. मैंने लिखा तो चलता है, ठीक है. मुझे एग्जाम नहीं देने ना, आपको देने. So 1.67, 1.67 and this, how much it is? Contribution to 2. The next financial leverage, EBIT upon EBT. Just check, are you getting these answers? 1.33, 1.09. So combined leverage, simply multiplication of the two leverage. So as you had told, situation 2 plan A, the total leverage are getting highest because both the fixed cost is highest. बस इतना ही था इस एग्जाम्पल में. डन. चलो बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क करेंगे क्या? पर डे मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चंस करना है, बट देन आज आप 2 क्वेश्चंस करोगे, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, कल संडे, कल नहीं करेंगे. चलो मंडे आई ऑलरेडी टोल्ड, मंडे नहीं करेंगे काय, हा मग सुट्टी आहे ना, मग होमवर्क करायला पाहिजे. ठीक है, काय रेस्ट घ्यायचं नाही. एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करो. फिफ्थ मंडे कर सकते हैं आप. ओके, आज 2 क्वेश्चन, मंडे एक क्वेश्चन कर लेना. ओके, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज योर फोर्थ क्वेश्चन. इफ यू सी योर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, प्लान ए, प्लान बी, एज इट इज रेप्लीकेशन, जस्ट नंबर्स आर डिफरेंट. ओके, एक बार प्रैक्टिस होगी ना आपकी. 6th आई गेस हमने सॉल्व किया हुआ है. 7th ऑल्सो वी हैड सॉल्व, 8th ऑल्सो वी हैव सॉल्व, 9th वी हैव सॉल्व. जस्ट चेक करो 9th सॉल्व किया नहीं किया है, क्या है. 9th वी हैव डन, 10th, देन रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. 13 पेंडिंग है नहीं, आई थिंक 13 भी हुआ है. हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है ना. चलो, नाउ कैन वी स्टार्ट विद द एग्जाम क्वेश्चंस. देन व्हाट टू डू? न्यू चैप्टर, पहले ये तो कंप्लीट कर लेते. विल सी हाउ द क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम. सम क्वेश्चंस आर सिंपल टू सॉल्व, सम क्वेश्चंस आर ट्रिकी. सो विल सी. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एमटीपी में से, रीड दिस क्वेश्चन.
क्या कहा, क्या होना है? आप मतलब यू आर सेइंग ऑन माय बिहाफ और यू आर टेलिंग टू मी? हम वी विल सॉल्व, आपसे नहीं कहेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? रीड दिस क्वेश्चन. स्क्रॉल करो. Tax rate is been given 35%. You have to simply calculate degree of operating, financial and combined leverage at the current level of sales if all operating expenses other than depreciation are variable cost. देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है टोटल 12 lakhs, इसमें से डेप्रीसिएशन 6 lakhs है, ये एक ही फिक्स्ड कॉस्ट है, रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट विल बी 6 lakhs, राइट? तो सेल्स में से ये वेरिएबल लॉस वेरिएबल कॉस्ट लेस करो तो आई बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन, इसमें से ये डेप्रीसिएशन जो है फिक्स्ड कॉस्ट, इफ आई डिडक्ट आई बी गेटिंग ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट दिया हुआ है सो आई बी गेटिंग ईबीटी, देन टैक्स रेट इज बीन गिवन सो आई बी गेटिंग ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट करें तो ईपीएस. ईपीएस पूछा है कि नहीं बाय द वे? you have to calculate EPS at new level of sales. So total assets remain at same level, but the sales 20% rise and 20% decrease, you have to calculate. Can you tell me operating leverage and financial leverage? $1.27. Financial leverage 1.37. Combined leverage simply multiplication of this two. So question was at existing level operating, financial and combined leverage हमें calculate करने थे at current sales level. And second question, if total assets remain same, sales is changing, you have to calculate EPS. Okay, so you have to show in the two workings. Isn't this question very simple? चलिए, मॉक टेस्ट का ये जो क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए था. 8 मार्क्स एग्जाम में अगर आएगा तो अभी 5 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स एट द मोस्ट कंसिडरिंग द टाइम. कमी बताया ना कि पहले 60 मार्क्स का एफएम हुआ करता था, अब 50 है. एंड सेकेंड थिंग, अर्लियर एमसीक्यू नहीं था, तो 60 मार्क्स यूज्ड टू बी टोटल प्रॉब्लम्स, नाउ 15 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मार्क्स कम. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन हेडिंग. पहले तो हेडिंग लिखिए एग्जाम क्वेश्चंस, एग्जाम स्लैश आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन. इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, so first working, calculation of operating, financial and combined leverage. Instead of drawing table directly we can write in formula manner, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में. In this operating leverage, what is the formula for operating leverage?
कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली दिया नहीं है, बट वी कैन शो द वर्किंग 34 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 lakhs. So here write down 34 lakhs minus 6 lakhs. Is it correct? क्वेश्चन में आपको सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट दिया है, EBIT डायरेक्टली दिया हुआ है, तो EBIT डिवाइडेड बाय 22 lakhs. So how much it is? 1.27, which you have calculated. Second, financial leverage. EBIT upon EBT. So EBIT is 22 lakhs, EBT is 16 lakhs. हाँ, I'll just check. मुझे भी अभी याद नहीं कौन से ईयर का लिया था मैंने, ईयर याद नहीं मुझे, चेक करके बताता हूँ मैं आपको. ओके, मैंने यहाँ पे दिया नहीं है. 1.375 मोस्टली रिसेंट ही एग्जाम लिया हुआ है, तो 2001 के आगे का ही MTP होगा. okay? 2001 नहीं, सॉरी 21 के आगे का होगा. 2001 नहीं, 21 के आगे का ही होगा. एंड देन थर्ड, कंबाइंड एवरेज. This is operating leverage into financial leverage. So 1.74, 746 you can write. Done. Second working. फर्स्ट वर्किंग का नाम क्या दिया था हमने? ए लिखा था या फर्स्ट लिखा रहेगा, जो भी हो. नाउ सेकेंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ EPS. नाउ यू हैव टू ड्रॉ टेबल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एंड दो सिनारियो में कैलकुलेट करना था. सेल्स इंक्रीज्ड by 20% and sales decreased by 20%. Right hand side, 2 columns. So serial number A, sales. Have you drawn first of all columns? तो सेल्स कितना दिया है? 34 lakhs. अब फर्स्ट कॉलम में सेल्स कितना आएगा देन? 34 lakhs प्लस 20%, 40 lakhs 80,000. And second column 27 lakhs 20,000. Less variable cost. Will variable cost change in the same manner? Yes. The existing variable cost was 6 lakhs plus 20%, 7 lakh 20,000, and 6 lakhs minus 20%, 4 lakh 80,000. So we'll be getting contribution. 40 lakh 80,000 minus 720, 33 lakh 60,000, 22 lakhs 40,000. इसमें से लेस करना है हमें फिक्स्ड कॉस्ट. क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा.
EBIT 27,60,000. This is EBIT minus interest. Will interest change? No. Interest will also remain fixed. It is financial fixed cost. Interest 6 lakhs है, as it is continue होगा. So you will be getting EBT 21,60,000, 10,40,000. Now from this you have to deduct tax at the rate. क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स रेट 35%. So at the rate 35%, 7,56,000 and 3,64,000. So you'll be getting EAT 14,04,000, 6,76,000. We have to calculate EPS and question में preference share capital दिया नहीं है. So this EAT itself is the earnings available to equity shareholders. So simply divided by number of equity shares. How much is the number of equity shares? Balance sheet से आपको मिल सकता है टोटल 80 lakhs कैपिटल है, पर शेयर फेस वैल्यू इज 10. सो 8 lakhs होगा ना. So show working 80 lakhs divided by 10. So 8 lakhs. So earnings per share, you can write down the formula EAT upon number of shares. $1.755, 0.845. So wasn't this question very simple? Leverage में से ऐसे ही simple questions आएंगे. Sometimes a bit tricky question has been asked. We'll see what type of questions. Completed? So this was the first question. Now second question also, if you see, this is very simple. Sales आपको दिया हुआ है, interest दिया हुआ है, operating leverage दिया है, combined leverage, so we can calculate financial leverage, right? So you are required to calculate financial leverage. This will be very simple. Fixed cost calculate करना है. So financial leverage will be equal to EBIT divided by EBIT minus interest. Now this has been given, interest has been given, so I can calculate EBIT, right? So once I get EBIT, sales has been given, using operating leverage I can calculate contribution, right? And once I get contribution, then I can calculate fixed cost as well, and also I can calculate the PV ratio. So this example is also very simple, so we will solve it, but we'll solve it later on. 5 mark के लिए question था, okay? This 10 marks question is also similar to the question which we have solved. Fourth question तो exactly same है जो इन्हें homework के लिए रखने वाला है. So what we'll do, तो मैंने कहा था कि एक interesting question था, ये भी 7 question भी exactly same question हमने solve किया हुआ है बीटा पे जो question था, okay? ये RTP 2019 का था, उसके बाद एग्जाम में भी पूछा गया था. I don't remember the year. Read 10th question. This question was been asked in December 21 for 10 marks. Interesting question है. Normally जो leverage पे simple questions आते हैं most of the times. In this exam December 21 it was a bit different or tricky we can say. Direct information was not being given. तो पहले जो difficult है वो solve कर लेते हैं. At the end simple question complete कर लेंगे.
ईएटी डायरेक्टली दिया नहीं है, सेल्स का 5% दिया हुआ है. ओके, इनकम टैक्स रेट 50%, तो ईबीटी के ऊपर 50% कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग लेवरेज 4 दिया हुआ है. डिबेंचर का टोटल अमाउंट है 3 लाख, उस पर इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट कर सकते हैं 30,000. वेरिएबल कॉस्ट 6 lakhs. एंड देन सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स. या इनकम स्टेटमेंट बनाना है. सेल्स वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट गिवन टू यू, contribution, fixed cost, EBIT, everything we have to calculate. And then also you have to calculate financial leverage and combined leverage. क्या अच्छा सिर्फ operating leverage दिया हुआ है. And calculate the percentage change in EPS if sales increased by 5%. So that we'll see later on. First thing first, income statement बनाना है हमें. Should we discuss and solve it over here या आप try करेंगे? What to do? How many of you say कि यहाँ पे solve करते हैं? Everyone says you'll try. मुझे कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट ट्राई करना है तो करो. थिंग इज दैट दिस क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट. ओके, तो ऐसा ना हो कि जब आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए. ट्राई करो. चलिए, बट रिमेंबर लेवरेज के मोस्टली सिंपल क्वेश्चन आते हैं. समटाइम्स बिट डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इनकम स्टेटमेंट बनाना है पहले हमें. You can solve it in rough or fair. 10 marks, 10 minutes. You can tell any of the missing figure. Any missing figure, if you are getting correct, then remaining all calculation will be getting correct. Sales बता सकते हो आप मुझे. Sales ना.
रीचिंग टिल आंसर इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट और रॉन्ग एट दिस स्टेज। आपने तो पहली बार स्टडी किया है लेवरेज। इतना सिंपल नहीं, इक्वेशन फ्रेम करना होगा आपको। आंसर कैसे पता नहीं, लेकिन मिला है 12 lakhs सेल्स। आई एम टेलिंग सेल्स 12 lakhs। डिस्कस करें, सॉल्व कर रहे हो अभी? डिस्कस करें। Sales minus 40% of sales. How 40%? But though should we discuss? चलिए चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, फॉर्मेट क्या दिया है, डिस्कस करते हैं ना, अभी टाइम हो गया ना। चलो, विल वेट फॉर 2 more minutes। FM का बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, इफ यू गेट द आंसर यू विल गेट फुल marks we can say, but if you don't get you will not be able to even start। which cost, fixed cost कितना है? फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया क्या पहले? 3,30,000 नहीं, फिक्स कॉस्ट 4,50,000। हाँ, दैट इज करेक्ट। फिक्स कॉस्ट 450 if you are getting correct। चलो 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 डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको सेल्स दिया माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज बीन गिवन 6 lakhs। कंट्रीब्यूशन वी डोंट नो, फिक्स्ड कॉस्ट वी डोंट नो, ईबीआईटी वी डोंट नो, इंटरेस्ट वी कैन राइट ना। आपको दिया है 3 lakhs का डेट, 10% इज द डिबेंचर्स, सो इंटरेस्ट 3 lakhs इंटू 10%। मैं जस्ट रफ में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन ईबीटी माइनस टैक्स, टैक्स रेट दिया आपको 50%, so tax rate is 50%, and then EAT, so you have to just fill in the blanks, right? Time being as a rough, अगर मैं EBIT को X मानूं तो EBT क्या होगा? X minus 30,000, right? Then tax क्या होगा?
इस पे 50% होगा ना, 50% मीन 0.50 इंटू एक्स माइनस 30,000, देन EAT क्या होगा, रिमेनिंग 50% बराबर दैट इज 0.50 इंटू एक्स माइनस 30,000 बराबर. तो कैन आई से EAT इज इक्वल टू 50% ऑफ x that is EBIT minus 30,000. Is it right? And EAT आपको दिया हुआ है, it is 5% of sales. So can I say 0.05 into sales is equal to 50% of EBIT minus 30,000. Is it correct? ये अपना इक्वेशन बन सकता है, बट यहां पे फिर भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल है यहां पे, सेल्स हमें पता नहीं, EBIT बताना है, राइट. बट देन वी डू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेट एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया है 4, बट वी डोंट नो कंट्रीब्यूशन इधर. बट देन कैन वी राइट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT. सो EBIT I'll take on left hand side. तो EBIT is equal to sales minus 6 lakhs upon 4. Is it right? तो यहां पे EBIT की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं. तो इक्वेशन बन रहा है 0.05 इंटू सेल्स इज इक्वल टू 50% इंटू सेल्स माइनस 6 lakhs अपॉन 4 माइनस 30,000. Is it right? Now only missing figure is sales, so I can simplify this equation and calculate the value for sales. And once I get sales, remaining calculation will be far more simpler. Easy था कि नहीं? Have you understood this? ठीक है, आपको हमेशा ये फॉर्मेट याद रखना है एंड फॉर्मेट के सीक्वेंस में ही जाना है. ओके, यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस EAT सेल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, सेल्स इनटू 5% और 0.05. So in this question, as everything was not been given directly, it was supposed to be calculated in the form of framing an equation only. Have you all understood this? And once you get this, remaining all one by one you will be able to calculate. Okay, simultaneously start करते solve करना, you will relate it properly. Okay, चलिए write down, mark this question as important. This is 10th question which was been asked in December 21. Working note 1, EBIT. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. So 4 is equal to contribution is basically sales minus variable cost. Here we can write, since contribution is equal to sales minus variable cost on EBIT. Therefore EBIT is equal to sales minus 6 lakhs divided by 4. इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे. EBIT हमने सेल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है. क्यों किया है? क्योंकि EAT सेल्स के परसेंटेज में दिया हुआ है. ओके, written so far. Second working note, sales, heading लिखिए sales. Write down, let EBIT be X. Time being, just for writing. Then EBT will be equal to X minus interest, that is X minus 30,000.
EAT is equal to 0.50 into x minus 30,000 since tax rate is 50%. हमने डायरेक्टली EAT लिखा है, 50% लेस करने के बाद जो बैलेंस 50% आएगा दैट वी हैव रिटन. ओके, यहाँ पे गिवन दैट EAT is equal to 5% of sales. EAT is equal to 5% of sales. Therefore, 5% of sales is equal to 0.50 into x minus 30,000. ये इक्वेशन जो था EAT, मैंने EAT में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, राइट. So we'll simplify. 0.05 into sales is equal to, we'll multiply 0.50x minus 15,000. Now below this, from equation 1, 0.05 into सेल्स इज इक्वल टू 0.50. अब x की जगह हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. टाइमिंग यहाँ पे EBIT के लिए ऊपर वर्किंग नोट 1 में x लिखे, वर्किंग नोट 1 में EBIT के लिए x लिखे. तो इक्वेशन 1 में हमने EBIT की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सेल्स माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4. राइट डाउन, सेल्स माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4. x की जगह हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ सिंप्लीफाई. अब यहां से आगे क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स, एंड यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स. So 0.05 into sales is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.50 into sales divided by 4 minus 0.50 into 6 lakhs divided by 4 minus 15,000. 0.05 sales is equal to, so 0.50 divided by 4 कितना आएगा, 0.125 sales minus 6 lakhs into 0.50, 3 lakhs divided by 4, 75,000 minus 15,000. अब ये 0.125 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा, सो 0.05 सेल्स माइनस 0.125 सेल्स इज इक्वल टू माइनस 90,000. रिसल्वेटिंग माइनस 0.075 सेल्स इज इक्वल टू minus 90,000. Minus minus sign get cancel. Sales is equal to 90,000 divided by 0.075. Sales value 12 lakhs. Completed. And here we can calculate EBIT also. EBIT का इक्वेशन हमने ऑलरेडी 1 में लिखा था. So from equation 1, EBIT is equal to
sales minus variable cost upon 4, that is 12 lakhs minus 6 lakhs upon 4, 6 lakhs upon 4. So EBIT you are getting is 1,50,000. Now we can complete with that table. Have you completed? This was second working, na? So write down third working. Income statement. फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. सेल्स हमने कैलकुलेट किया है 12 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6 lakhs, so contribution is 6 lakhs less fixed cost. We don't know the fixed cost, but we have calculated EBIT. EBIT 1,50,000. So this will be balancing figure 4,50,000 less interest 3 lakhs into 10%, 30,000. So EBT 1,20,000 less tax at the rate 50%, 60,000. EAT 60,000. Just let me know if you are completed. Done? Okay. एक और क्वेश्चन था इसमें. नहीं, पहले तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना था एंड देन फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट करना था. चलिए वो कैलकुलेट करते हैं. फोर्थ हेडिंग लिखिए, फोर्थ वर्किंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. इसमें फर्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज वी कैलकुलेट एज EBIT upon EBT. So EBIT 1,50,000 divided by 1,20,000. 1.25. Operating leverage क्वेश्चन में दिया हुआ है. Combined leverage is asked for. This is operating leverage into financial leverage. So 4 into 1.25 is 5. Done. And last question, calculate percentage change in EPS if sales increase by 5%. Can you tell what will be the percentage change in EPS? EPS कैलकुलेट नहीं करना है, बस परसेंटेज चेंज बताना है. कितना आएगा? 25%. बराबर ना. कंबाइंड लेवरेज आपको दिया हुआ है 5%. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर सेल्स 1% से चेंज हो तो EPS विल चेंज बाय 5%. एंड हमें दिया है सेल्स 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो EPS में कितना परसेंटेज होगा? प्रोपोर्शनेट 25. राइट, बस इतना ही लिखना है हमें. सो राइट डाउन नेक्स्ट वर्किंग फिफ्थ. यहां पे कोई वर्किंग नहीं दिखाना है, जस्ट वी कैन राइट डाउन इफ
sales changes by 5% and combined leverage is 5, then EPS will change by 25%. 5 into 5. Underline, EPS will change by 25%. And for your understanding why we have multiplied, you can just show the working. Sales EPS 1%, EPS 5%, since combined leverage is 5. So sales changing by 5%, cross multiplication, this will come to 25. Done. Now tell me, wasn't this question very simple? Some basic एकदम सा छोटा सा वो एडजस्टमेंट था, वो अगर आपने इक्वेशन फ्रेम करा तो बाकी सिंपल था. So reaching till that part was only important. बताइए सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें या ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करें? ये देखिए एक और क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने सॉल्व किया था 6th. ये 120 से 1 लाख पे जा रहा है. हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 लाख से 120 पे जा रहा था. ओके, इट इज वेरी सिमिलर. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है, May 23 में आया था. Following information is given for X Limited. Total contribution दिया 4,25,000. Operating leverage has been given 3.125. Preference share capital यहाँ पे 1,000. Preference shares 1,000 of 100 each. Number of equity shares 2,500. Tax rate 50%. Calculate EPS of X Limited if 40% decrease in sales will result. ये कैलकुलेट करना था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. इफ 40% डिक्रीज इन सेल्स विल रिजल्ट EPS टू 0. कैलकुलेट करके बताइए EPS कितना आएगा. इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है. लेट्स सी. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन था ये. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, याद है? फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क के, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेवरेज पे क्वेश्चन आ सकता है. 5 मार्क पे कंपलसरी क्वेश्चन. चलिए EPS बताइए. वैसे क्वेश्चन सिंपल है, छोटी सी एडजस्टमेंट है. EPS 21.2. वन आंसर आएगा 21.2.
ये 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, राइट। चेक करो एनी डिफरेंट आंसर। You have to consider all the information which is given in the question. 21.2. This should be the most common answer, by the way. 21.2, which is not correct. No. Should we discuss? हरीश क्या मतलब? सॉल्व करें। चलिए एक एक मुझे बताइए एटलीस्ट आपने क्या क्या कैलकुलेट किया। कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट किया है? जैसे कंबाइंड लेवरेज की जरूरत थी। कंबाइंड लेवरेज कितना आ रहा है? कैसे 4? यू आर टेकिंग आंसर। कंबाइंड लेवरेज कितना? 6 पॉइंट या 1 2.5 आना चाहिए ना। EPS has came down to 0. So what is the percentage change in EPS? Any number if it is coming to 0, तो कितना percentage change? 100%. या sales is changing by 40%. Combined leverage का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. So 100 divided by 40. Combined leverage कितना आ रहा है? 2.5. How many of you have calculated this first of all? मैंने आपको कहा था कि all information you have to consider. Combined leverage, एक सेकंड, first have you understood how 2.5 percentage change in EPS divided by percentage change in sales. अब ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 3.125. देन फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ रहा है बताइए? 1 पॉइंट, यू श्योर? 0.8 ना? अरे इसको क्या हो गया, एक सेकंड रुको। Just a second. 28 is correct. If you are getting EPS 28, then it is correct. Operating leverage यहाँ पे 3.125. You already know combined leverage is equal to financial leverage into operating leverage. So 2.5 is equal to financial leverage into 3.125. So financial leverage is 2.5 divided by 3.125. So 0.8. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइनेंशियल लेवरेज 1 से लोअर हो सकता है क्या? फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? EBIT से फॉर एग्जांपल एक 1 लाख है, माइनस इंटरेस्ट सपोज 20,000 है, देन EBT से 80,000 आ रहा है। जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं मैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा यहाँ पे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000
तो कितना आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 1 पॉइंट समथिंग 2.25 राइट। तो हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि हमेशा आपका ईबीआईटी हायर होगा, ईबीटी कम होगा, एंड वी राइट फाइनेंशियल लेवरेज एज अ रेशियो ऑफ ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डिनोमिनेटर नॉर्मली हमेशा कम ही रहेगा बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट हम लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो ईबीटी आएगा वो लेस ही आएगा, तो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज लोअर, न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज हायर। तो फाइनेंशियल लेवरेज हमेशा आपका 1 से ग्रेटर आएगा। ओके हाँ, हो सकता है अनलीवर्ड फर्म हो। अब अनलीवर्ड फर्म मतलब क्या, डेट कंटेंट नहीं है, 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, तो इन दैट केस इंटरेस्ट आपका 0 होगा, तो ईबीटी कितना होगा 1 लाख राइट। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, एट द मोस्ट फाइनेंशियल लेवरेज कैन गो डाउन टू 1। इज इट राइट? नाउ इन दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन आपका फाइनेंशियल लेवरेज 0.8 आ रहा है। अब 0.8 मींस आपका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो अगर ये 0.8 आ रहा है, कैन आई से डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर राइट। यहां पे ईबीआईटी कैलकुलेट किया है क्या हमने? ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बट देन 1,36,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब ईबीटी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इफ आई कैलकुलेट हाउ मच इट विल बी 1,70,000। अब ईबीआईटी आपका 136 है एंड ईबीटी 1,70,000 है, तो इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पेइंग, हियर वी कैन अज्यूम इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। नॉर्मली हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इन दिस एग्जांपल क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद ईबीटी लोअर आना चाहिए, लेकिन इन दिस एग्जांपल इट इज हायर, तो हियर इंटरेस्ट शुड हैव बीन रिसीव्ड नॉट पेड। ओके, ये जस्ट कंसेप्चुअली बता रहा हूं। नंबर्स के साथ अगर जाएंगे तो ईबीटी 170, देन रिमेनिंग कैलकुलेशन विल बी सिंपलर। ईबीटी में से टैक्स लेस करेंगे, ईएटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी ईएटी में से अगर इसको कंटिन्यू करें तो लेस टैक्स, टैक्स रेट कितना दिया है 50%, सो इट विल बी हाउ मच 85,000। तो 85,000 ईएटी, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए 1000 into 100 that will be the total share capital into 15%, that is 15,000. so earnings available to equity shareholders कितना आएगा 70,000 divided by number of equity shares, क्वेश्चन में दिया है 2,500, so 70,000 divided by 2,500 it should be 28. if you just go with the numbers calculation is far more simpler, but try to understand conceptually. नॉर्मल केसेस में फाइनेंशियल लेवरेज हमेशा मिनिमम 1 या उससे ज्यादा होगा। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज अ रेयर एग्जांपल जहां पे दिया हुआ है कि फाइनेंशियल लेवरेज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन 0.8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट हमने पे नहीं करा, इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, क्योंकि यहां पे ईबीआईटी सॉरी ईबीटी इज ग्रेटर देन ईबीआईटी। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? So if we just go with the numbers, then based on the information given एक एक वर्किंग दिखाएंगे तो कैलकुलेशन सिंपल होगा। बट ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने क्यों कहा था, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज कभी 1 के नीचे मोस्टली नहीं आता। इन दिस एग्जांपल इट वाज बीन गिवन इन योर एग्जाम व्हिच इज रेयर। ओके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सॉल्विंग के लिए लिया हुआ था। ओके, तो कैन वी सॉल्व? पहले वर्किंग से सॉल्व करते हैं, देन विल सी कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। ओके, चलो राइट डाउन, दिस इज एग्जांपल नंबर 11, May 23. First working, write down combined leverage. जिनका आंसर 21.2 आया था, आपने क्या किया, ईबीआईटी जो 1,36,000 कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट किया बाय अज्यूमिंग देयर इज नो इंटरेस्ट, बट देन कंबाइंड लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज के बेसिस पे फाइनेंशियल लेवरेज जो आ रहा है वो भी कंसीडर करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। आपने बस अज्यूम किया कि इंटरेस्ट नाइदर पेमेंट है नॉर रिसीट है, बट फाइनेंशियल लेवरेज इन दैट केस शुड हैव बीन 1। देन फाइनेंशियल लेवरेज अगर 1 है तो इसका मतलब इंटरेस्ट कोई अमाउंट नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज 1 कब आएगा, जब ईबीआईटी एंड ईबीटी सेम होगा तब, राइट। बट इन दिस क्वेश्चन फाइनेंशियल लेवरेज इज नॉट कमिंग 1, इसका मतलब आइदर इंटरेस्ट पेमेंट है या रिसीट। ओके, सो फर्स्ट वर्किंग राइट डाउन कंबाइंड लेवरेज, this is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, sorry sales.
ये लास्ट में अगर इंफॉर्मेशन ना होती, ये ईपीएस अगर 0 हो रहा है तो सेल्स का चेंज 40% समथिंग इंफॉर्मेशन, अगर ये ना होता तो व्हाट यू आर कैलकुलेटेड 21.20 अमाउंट ईपीएस, दैट वाज करेक्ट. ओके, so that is equal to 100 divided by 40. यहाँ पे 100 का एक्सप्लेनेशन लिखिए कि 100 क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया नहीं है, जस्ट विल राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. व्हेन ईपीएस comes down to 0, it means it is reduced by 100%. Just explanation लिखिए. फर्स्ट वर्किंग में हमने कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट किया. सेकेंड वर्किंग, फाइनेंशियल लेवरेज एंड EBIT. both the things will calculate in the one working. इसमें फर्स्ट done combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Therefore financial leverage is equal to combined leverage upon operating leverage. So 2.5 divided by 3.125. So financial leverage 0.80. And then second working, नहीं इसी में मतलब ये फाइनेंशियल लेवरेज है ना EBIT, तो इसी में सेकेंड पार्ट EBIT. EBIT कैसे कैलकुलेट किया आपने? ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ऑपरेटिंग लेवरेज 3.125 इज इक्वल टू EBIT दिया, सॉरी कंट्रीब्यूशन दिया गया, हाँ 4,25,000. तो 4,25,000 डिवाइडेड बाय EBIT. So EBIT is equal to 4,25,000 divided by 3.125. So 1,36,000. Written. Now third working. You can write EBT. Financial leverage is equal to EBIT upon EBT. So 0.8 is equal to 1,36,000 divided by EBT. Therefore EBT is equal to 1,36,000 divided by 0.8. So that is 1,70,000. And now fourth working, we can show EPS. Simply write, we can particulars rupees, EBT 1,70,000 less tax at the rate of 50%, that is 85,000. So EAT 85,000 less preference dividend. Show working 1,000 shares into 100. So that will be 1 lakh into 15%. Preference dividend 15,000. So we'll be getting earnings available to
equity shares 70,000, number of equity shares 2500, ये दिया हुआ है. So EPS 28. Wasn't this question also very simple? Actually ये different था. It was not expected कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज लोअर देन 1 होगा. ओके, बट देन ये एग्जांपल सॉल्व करने का पर्पस बस ये था कि यू कैन और यू शुड बी रिमेंबरिंग कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि समटाइम्स इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर माइट बी अ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो. ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये दो क्वेश्चंस ट्रिकी थे. रेस्ट इफ यू सी ऑल पेपर्स फ्रॉम द लेवरेज, रेस्ट ऑल एग्जांपल्स इफ यू सी, दीज वर वेरी सिंपल एग्जांपल्स. ओके, हाँ, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था May 24, उसमें भी FM का पेपर ट्रिकी था. Okay, yeah, so partial might be, but that we'll see. So we'll be concluding now. Next lecture will solve. अब ये May 23 का हमने complete करा ना, तो November 24 and May 23 will solve. May 24 sorry, that example will solve, and then remaining question जो simple है वो complete करेंगे. So probably next lecture में हम leverage का last part होगा. Okay, मतलब examples complete करेंगे, and then we'll be starting with the new chapter. Study module के question जो है वो daily 2 और 3 हम discuss करेंगे. Okay. If any question is different, then we'll solve over here. Otherwise, all the questions are simple, which we have solved. Okay, similar to what we